It's my privilege that I've been given an opportunity to address you all and share few of my experiences and knowledges. In this regard, this will be my first presentation. Inshallah, in future also, I'll try to share whatever knowledge I have on this platform. If I am given an opportunity, I'll do that. Alhamdulillah, now let us start my presentation. The topic of my presentation I have decided because you told me just one day earlier, and I had to just think of which would be the suitable topic to be presented here. So I thought that being a teacher from the Saidla department, I will try to expose most of the things which are being, which even everyone know it, but they're not able to explore it much. So taking this into consideration, I'll just speak about nutraceuticals, that is इलाज बिल ग़िज़ा एंड इलाज विद दवा, दोनों का कॉन्सेप्ट जो है हमारे यूनानी के अंदर, इसको हमने जम करके एक इलाज बिल ग़िज़ा के बैनर में लेके आए हैं. तो आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर सम ऑफ द ड्रग्स विच एक्ट. हम लोगों ने किताबों में जस्ट अपने यूजी में पढ़ा था, थोड़े मिसालें थी जो यूजी में जो मुफरदात की थी, जो इलाज बिल ग़िज़ा और इलाज बिल दवा के बारे में. लेकिन बहुत सारे फॉर्मुलेशंस हैं हमारे तिब में जो ये दोनों का काम करते हैं. सो आई ट्राई टू एक्सप्लोर सम ऑफ देम एंड आई स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन नाउ. Sure. I hope you are able to see my screen. Okay. So my topic today is nutraceuticals as dosage from a Unani perspective. Nutraceuticals, this has become a fashion word nowadays because of many lifestyle disorders. Most of the people who are experts in dietetics, that is, who do some special courses on dietetics and nutrition, they use these nutraceuticals. Whereas even though this is available in our system, we are not able to represent it in a proper way. I hope my presentation will help a lot. Hippocrates says that our food should be our medicine and our medicine should be our food. What do you mean by this? The quantity of food you eat should be the best in quality and it should be limited, whereas our medicine should be food, means we have to find out the medicinal qualities in our food which will be helpful to us. So he says that our food should be our medicine and our medicine should be our food. Here the concept of ilaj bil ghiza and ilaj bil dawa applies. He also says that a good diet promotes good health and prevents the onset of disease. Your food should be your medicine. As we all know that I have summed everything together. Dietotherapy, made it as a dietotherapy topic. It is a science to the dietary management of diseases. Basically, ilaj bil ghiza is the science which where you try to manage the diseases through diet. It plays a vital role in maintenance of good health and in prevention and cure of diseases. The primary cause of disease is a lowered resistance in the body arising from adoption of faulty nutritional pattern, isn't it? Nowadays, the fashion of eating all junk foods is one of the cause due to which our resistance is lowered, and that is not only junk foods, all faulty nutritional pattern, like people who work in multinational companies, they do not follow the proper regular circadian cycle. Instead, the time they have to sleep, they keep themselves awake and they eat all junk foods at the wrong time during the night, and they sleep during the daytime because of the job pattern. So all this come under this faulty nutritional pattern. So this is the reason why most of the people, they suffer from lowered resistance.
The word diet is taken from a Latin word dieta means a way of living. Diet can be defined as any substance which is used for the purpose of providing nutrition to the body through metabolism. In diet therapy, health is attained by modulation of dietary habits. See here in diet therapy, in Ilaj Bil Ghaza, you try to modulate the different diets so that they should have some additional effect also in them. And it also seeks to restore the imbalance in the body caused due to some genetic infection or errant lifestyles. So here, the concept of restoring the imbalance in the bodies means restoring the imbalance which has occurred in humors. Usually what you eat gets converted into filth, that is, if good food you have consumed, healthy food, it gets converted into healthy filth, that is dumb. If there is some imbalance in the food which you take, this also results in formation of filth ghair tabai, which results in different diseases. So the basic principle, what do you do in the diet therapies? The food should nourish, it should be nourishing, and it should help to safeguard health. It should play a vital role in fighting ailments, and it should be in good taste also. Patient should be readily accept the diet because even sometimes if the diet is little bit not palatable, the patients usually they refuse it. So modified diets are the principal therapeutic agents in some metabolic diseases. Whatever you do some dietary modulation in the formulations, those are called as modified diets. It serves, this diet serves as a preventive measure as well as a therapeutic aid. Most of the lifestyle diseases can be cured by administration of specific diets or by regulating the quantity and quality of food. In addition to nutritional properties, several foods possess pharmacological actions and have medicinal value. See, here this applies the definition of Ilaj bil Ghaza and Ilaj bil Dawa. The purpose, why do you have to start the treatment with Ilaj bil Ghaza? See, basically, as we all know, there are 4 treatment modalities in Unani system of medicine. The first treatment modality is Ilaj bil Ghaza. You try to treat the condition with modulation of the diets. If that is, you are not able to do that, you combine it with Ilaj bil Dawa, the next treatment modality. You try to give both together. When these two start working, you'll find good results. But sometimes even in some chronic conditions, when you are not able to treat it successfully, then you have to go to the third treatment modality, that is Ilaj bil Tadbir. Here you try to rejuvenate the body, you try to expel the waste products which are formed in the body which are causing the disease by certain eliminative processes. So that comes under Ilaj bil Tadbir. And next, finally, is Ilaj bil Yad. That is some surgical conditions where you will have to intervention with some surgical procedure. So coming to the first modulation, Ilaj bil Ghaza, the main purpose is to maintain good nutritional status, to correct deficiencies which may have occurred, to offer rest to the whole body or to certain organs which may have been affected, to adjust the food intake to a body's ability to metabolize the nutrients, to bring about changes in the body weight whenever required. So basically, when you try to modulate and try to give some light, हल्की फुल्की ग़िज़ा का जब जिक्र होता है हमारी किताबों के अंदर, the main purpose is that you want to give rest to the body, the system digest, because तबीयत अगर ग़िज़ा की हाजिमे की तरफ राग़िब हो जाए तो मर्ज के इजाले की तरफ से हट जाती है, उसका कंसंट्रेशन उस तरफ हो जाता है. तो इसके लिए बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, वी ट्राई टू गिव रेस्ट to the digestive system by giving some very light diets so that तबीयत का ध्यान ट्रीटमेंट की तरफ हो जाए, मर्ज के इजाले की तरफ हो जाए. The Unani system believes that a physician is not the healer but an assistant to tabiat, that is quwwat mudabbir badan, which is the true healer. Hence the diet should be in accordance with it. See here, as अभी अब मैं आपको बताई, अल्लाह ताला ने हम लोगों को एक बहुत ही सुपर पावर दिया है जिसको हम लोग तबीयत कहते हैं. दिस दैट इज मेडिकेट्रिक्स नेचुरे.
ये कुव्वत तबीयत जो हमारे बॉडी के अंदर है, कुव्वत मुदब्बिर बदन, that is the true healer. And whatever we do, whatever we try to intervene, is just we help the tabiyat to treat the disease. There is an elaborate healing mechanism within the body. Tabiat is the elaborate healing mechanism, but it can perform its function only if it is abundantly supplied with all the essential nutritional factors. अगर आप तबीयत को मुतदिल रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसके न्यूट्रिशनल फैक्टर्स जो भी एसेंशियल हैं उसको आपको सप्लाई करना होगा, सो दैट द तबीयत इज तबई हालत, it is healthy and moderate in condition. Diets have been mentioned according to various stages of life to maintain the digestive system at its best. See, when you try to explore the eligible Ghiza mentioned in a classical text, you'll find that depending upon different stages of life, like छोटे बच्चों की ग़िज़ा, नौमौलूद की ग़िज़ा, फिर उसके बाद में छोटे बच्चों की ड्यूरिंग देयर ग्रोथ पीरियड, ड्यूरिंग द जवानी में क्या खाना क्या करना है, ड्यूरिंग देयर मिडिल एज एंड ड्यूरिंग द ओल्ड एज, बहुत सारे चीज़ों को वहाँ पे क्लासिफाई करके मेंशन किया गया है. आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है. इलाज विल ग़िज़ा, यू ट्राई टू एक्सप्लोर, विल फाइंड वंडरफुल इंफॉर्मेशन. थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, विल सी दैट this diet therapy has a long history. It stems from the Zhou dynasty 1000 BC. Chinese medicine के अंदर भी ये concept था. A distinguished physician in Han dynasty realized the action of diet therapy during the rehabilitation from the disease. Nutrition as a discrete or separate discipline has been existent since Vedic times, that is 8000 years BC. ये तो बहुत ही पुराना आयुर्वेदा के अंदर भी एक सेपरेट डिसिप्लिन के हिसाब से न्यूट्रिशन का भी एक्सप्लेनेशन मिलता है. चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता डिस्क्राइब ऑल मेजर ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन इंक्लूडिंग डायटेटिक्स. नाउ कमिंग टू द यूनानी एस्पेक्ट, इजिप्शियन, रोमन, ग्रीक सच एज हिपोक्रेट्स, अरिस्टोटल, सेल्सस, गैलन, ब्राजस वर द ग्रेट पॉइनर्स इन डायटेटिक्स. इन लोगों ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है. दे हैड रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन वेरियस diseases. They gave much importance to diet during health and sickness. Arab physician Razis, he is called as the Galen of the Arabs, improved dietetics and advised when you can heal by diet, prescribe no remedy. After Razi, another Persian by name Avicenna, Abu Ali Sina, the Persian Galen. See, Razi was called as the Arabian Galen, whereas basically, excuse me, Jalinus or Galen, he is from Rome. And people, his followers from Arab, he's called as the Razi, he's the Galen of Arab. Abu Ali Sina, he's from Persia, he's called as the Persian Galen. He gave much more importance to diet in sickness and health. Avicenna की जो book है मशहूर अल क़ानून, the canon of medicine, remained a classical medical text for many centuries all over Europe and Arabia. In the words of Sir Robert McCarrison, he is one of the best-known nutritionists. The right kind of food is most important single factor in promotion of health, and the wrong kind of food is most important single factor in promotion of disease. ये modern concept है. Even in Holy Quran speaks very high of the health and medicinal value of various fruits like pomegranate, anar, anjir, khajur, जैतून, दूध, मिल्क, शहद एंड जंजबील. सो इन सारे फ्रूट्स का जिक्र कुरान शरीफ में है, तो उसमें भी बहुत सारी उसकी हेल्थ एंड मेडिसिनल वैल्यू को एक्सपोज किया गया है. एंड कुरान आल्सो फॉरबिड सर्टेन हार्मफुल फूड्स लाइक ब्लड, कच्चा खून का इस्तेमाल जो करते हैं बहुत सारे लोग, मुसलमानों में तो नहीं, प्यूरिफाइड एंड अनस्लॉटेड, बगैर ज़िबा किया हुआ गोश्त एक्सेट्रा, it has been forbidden because it has its own harmful effects. However, dietetics gained more popularity during the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. During diet therapy, it is a unique non-medicinal therapy by which patients are treated and health is attained through modulation of dietary habits. Modified diets are the principal therapeutic agents in some metabolic diseases and chronic diseases. It serves as a preventive measure as well as therapeutic aid. According to, let us try to understand some of the concepts regarding Ilaj bil Ghiza.
which has been mentioned in Unani texts. Foods are broken down by the body हरारत गरीजिया, दैट इज द इनेट हीट. जो भी हम लोग खाते हैं वो हरारत गरीजिया से बॉडी के अंदर जाके उसके वो ब्रेक डाउन होती है. बट व्हेन एंजाइम्स come in contact with that food, the enzyme supposedly release heat that breaks it down. Now, how nutritious a particular food is depends on various factors, including how much of each humor it creates, and what season it is, and person's temperament. ये तीनों चीजें कितने मिकदार में अच्छी खिल बनती है, मौसम के लिहाज से और मिजाज के लिहाज से बहुत सारे उसके न्यूट्रिशनल फैक्टर्स बनते हैं. फूड सर्व एज बदले मा तहलुल, ये तो हम लोग सब जानते हैं कि जो भी हम लोग खाते हैं, जो नरिशमेंट होता है वो बदले मा तहलुल के तौर पर होता है, यानी रिप्लेस द लॉस फ्रॉम द वेयर एंड टेयर. जो रेगुलर बॉडी फंक्शंस होते हैं उसमें जो वेयर एंड टेयर होता है तो उसके लिए इसको रिप्लेस करते हैं. नाउ यूनानी डिफरेंट डाइट्स के बारे में जो यूनानी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में ये मेंशन है कि बेसिकली वी क्लासिफाई द डाइट इनटू दवाई ग़िज़ाई, a substance with more of medicinal value than nutritional value, and ग़िज़ाई दवाई, substance with more of nutritional value than medicinal value. अब ऊपर के जो मिसाल में है, जैसे अब लहसुन है, हम लोग जो आमतौर पे दवा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको ग़िज़ा में भी यूज करते हैं. लहसुन के अंदर उसकी दवाई कैफियत ज्यादा होती है. इसी तरह जो हम लोग दवाओं में यूज करते हैं उसमें जो न्यूट्रिशन होता है, जैसे बादाम है, दूध है, शहद है वगैरह. So these are few examples. Food may be of high calories or low calories. In this respect, it is classified as kasif ghiza, heavy foods, latif ghiza, light foods, mutadil ghiza, moderate foods, and there are many more. Now let us have a brief discussion of all this. Ghiza latif, that is easily digestible food. Ghiza latif, that is again grouped into two. One is Khalilul Taghziya, the other one is Kasirul Taghziya. That is Ghizai Latif. Khalilul Taghziya is easily digestible and low caloric food such as fruit juices, vegetable soups, etc. Ghizai Latif, Kasirul Taghziya, easily digestible high caloric food such as half boiled egg, meat soup और meat का जो माउल लहम होता है, distillate, wine, grape extract, etc. These are light and easily digestible, but they are high in calories, or they are kasirul taghziya. See, this is a few examples. The upper one is latif khalil taghziya, and these two are ghizai latif khalil kasirul taghziya. Now coming to the next one, ghizai kasif, that is not digested easily, such as meats, pulses, fruits like mango, jackfruit, etc. This again is of two types. Ghizai kasif, khalilul taghziya, that is difficult to digest and low calorie food such as dry animal meats and fish. This is not easily digestible as well as it has very less calories. Khalilul taghziya. Ghizai kasif, kasirul taghziya, difficult to digest high caloric food such as beef. This is not easily digested, but it is having high caloric food value. See here, the dried meat and the dried fish. Here and it's a beef. Next is ghizai mutawasit ya mutadil ya moderate, in between the first latif and kasif. Basically, in this group we have vegetable soups, milk, vegetables like pumpkin, fresh fruits, all come under this category, that is ghizai mutawasit or mutadil. So basically the general principles, उसूल इलाज बिल ग़िज़ा के अंदर आप लोगों को क्या क्या उसूल फॉलो करने पड़ते हैं. There are three concepts here. First is तरके ग़िज़ा, abstinence or fasting. तख़लील ग़िज़ा, reduction in diet or in the quantity. तब्दील or modification, that is in quality of diet. आवाज बहुत आ रहा है. Tarke Ghisa is basically, this concept is usually applied in acute conditions. Food is generally stopped or reduced in quantity in acute diseases. A process of purification, an effective and quick method of cure. It assists Tabiat in continuous effort to expel waste matter
and disease producing noxious substance from the body. अगर ग़िज़ा को तर्क कर दिया जाए थोड़े वक्त के लिए, अगर मरीज के अंदर इतनी ताकत है कि वो फास्टिंग कर सके या ग़िज़ा थोड़ी देर के लिए ना ले, तो इससे क्या होता है, तबीयत के अंदर एक डिजीज को जो गैर मादी मैटर होता है उसको बॉडी के बाहर एलिमिनेट करने में आसानी होती है, उसको तरफ ज्यादा डिजीज प्रोड्यूसिंग नॉक्सियस सब्सटेंस कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी एंड देयरबाय करेक्टिंग द फॉल्ट्स ऑफ इम्प्रॉपर डाइट एंड रॉन्ग लिविंग. ये तरकीब ग़िज़ा उस वक्त दी जाती है जब मरीज के अंदर इतनी ताकत है कि वो 1 या 2 दिन तक हल्का फुल्का सिर्फ पानी या फिर शहद का माउल असल वैसा वगैरह देके तरकीब ग़िज़ा कर सकते हैं. It also leads to repair and regeneration of various tissues of the body. Fasting affords a physiological rest to the digestive, assimilative and protective organs, isn't it? इससे एक रेस्ट मिल जाता है, सारे आज़ाए डाइजेस्टिव के जो भी ऑर्गन्स हैं उसको रेस्ट मिल जाता है, उनके फंक्शंस को रेस्ट मिल जाता है, तो बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने में, फिर दोबारा उनके रिपेयर एंड रीजनरेशन में बहुत सपोर्ट होती है तरकीब ग़िज़ा से. As a result, the digestion of food and utilization of nutrients is greatly improved after fasting. तखलील ग़िज़ा यहाँ पे है ना, कमी कर देना, इंटेक के अंदर उसकी क्वांटिटी के लिहाज से कमी कर देना. जैसे फूड में भी reduced or given in moderate quantity. If the strength is low, it should receive prior attention. अगर आप मरीज बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहा है तो उसको पहले हम लोग तखलील ग़िज़ा की तरफ चले जाते हैं. एंड इफ डिजीज इज सीवियर इट शुड बी अटेंडेड फर्स्ट. देयरफॉर डाइट इज रिड्यूस्ड इन क्वांटिटी और क्वालिटी. और टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज, यू हैव टू डिसाइड वेदर यू आर गोइंग टू reduce the quantity or the quality. It is reduced when desired to maintain the strength and allow sufficient time to the body to deal efficiently with the morbid condition, rather than the body get itself involved in digestion of a large meal. So this is what I explained earlier. Now coming to certain modified diets, what are liquid diets? Basically जो हम लोग तखलील ग़िज़ा करते हैं, जिसके अंदर हम लोग मरीज को जो देते हैं वो आमतौर पर ज्यादातर वो लिक्विड डाइट्स ही होते हैं. A liquid diet consists of eliminating solid foods from diet for a limited period of time. Instead of solid foods that most of us eat every day, those foods are instead replaced by liquids, juices, vegetable and meat-based broths. Some people choose to go on liquid diets for personal reasons. Example, health and wellness. आमतौर पे यहाँ पे जो आजकल जो वेट रिडक्शन के जो थेरेपीज चलते हैं उसके अंदर लिक्विड डाइट से प्रिफर किए जाते हैं. While others may go on a liquid diet due to an upcoming surgery or a procedure or after the procedure. Coming to the very first topic, example of, I'm going to now from here after my for future slides will describe some of the very important liquid diets which have been mentioned in our classical texts. The very first one is mouse shair, ashe jaw or barley water. We all usually in our regular practice we ask the patient barley ka pani bana ke piyo, barley ka pani piyo, but the correct way of preparing is very important to get the good effect. So first of all, how you have to prepare, I mentioned it. You have to prepare it with best quality barley in the ratio 1:20. आमतौर पे हम लोग मरीज को सिर्फ बोल देते हैं, कभी कभार तो मुझे यहाँ तक पता चलता है कि मरीज मिक्सी में डाल के उसको पाउडर करके पानी में उबाल के पी लेता है. दिस इज नॉट द करेक्ट वे. In this way, you are going to damage or spoil the fiber, which is the main effective substance which is present in the barley. Fiber को आप spoil कर देते हैं, जिससे बहुत सारे चीजों का नुकसान हो जाता है. So basically, you have to ask the patient to take. अगर आप 100 grams barley ले रहे हैं, तो 2 लीटर पानी मिनिमम, 1.5 से 2 लीटर. In some books it is mentioned 1:16 also. So इसलिए 1.5 लीटर से 2 लीटर के अंदर 100 ग्राम बार्ली डाल के उसको हल्की आंच पे कंटिन्यूस पकाए 1 घंटा 2 घंटा until you notice the color is changed. जब तक कि उसका कलर लाइट पिंकिश नहीं हो जाता उस वक्त तक आपको पकाना है, उसके बाद में उसको इस्तेमाल करना है. Sometimes आश जाओ मुलहम is also prepared by adding एखनी. अगर मरीज को ज्यादा ही कमजोरी नहात है
और उसको हल्की फुल्की ग़िज़ा भी देनी है तो यहाँ पे आप गोश्त की यखनी भी ऐड कर सकते हैं। आज है जो मोहम्मिस अनदर टाइप, इट इज प्रिपेयर्ड बाय रोस्टेड जौ। यहाँ पे खासकर उन मरीजों में जिसमें आप कुछ काबिजियत लेके आना है, जैसे IBS के पेशेंट्स में, माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के पेशेंट्स में, तो उस कंडीशन में आपको तो उस कंडीशन में आप बार्ली को भून के फिर उसका माऊ शहीर बना सकते हैं, जिसको कशाकुश शहीर कहते हैं। बार्ली के थोड़े खुसूसियत मेंशन, माऊ शहीर के कुछ चंद खुसूसियत हैं जो हमारे किताबों में मेंशन है। सबसे पहले वो है क्या है, इट इज मोतदिल ग़िज़ा एंड गुड इन टेस्ट, इट इज मुसक्किन हरारत, इट क्वेंचेस थर्स्ट, इट ब्रेक्स डाउन द एक्सट्रीम हॉटनेस ऑफ दम एंड सफरा। तो तमाम सफरावी और दमवी मरीजों के अंदर अगर आप माऊ शहीर बना के दें तो इट विल हैव रियली ए वेरी गुड इफेक्ट। इट एक्सपेंड्स अखलात सोख्ता और मवाद मुहर्रिका, जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो जल जाती है एक्सट्रीम हॉटनेस की वजह से, तो ऐसे कंडीशंस में उसको बाहर निकालने में मददगार होती है। मवाद मुहर्रिका जो जल जाते हैं मैटर्स, उसको निकालने में इससे क्या होता है, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, मतलब मैदे का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। यह सरीम नफूस है, बहुत आसानी से हजम भी हो जाता है। इट डज नॉट स्टिमुलेट अखलात फासिदा, यानी ये जाके बॉडी के अंदर अखलात फासिदा को मुहरिक नहीं करता है, उनके अंदर स्टिमुलेशन नहीं लेके आता। एंड इट डज नॉट स्वेल इन स्टमक, पेट के अंदर जाके फूलता भी नहीं है। इट डज नॉट क्रिएट फ्लैचुलेंस इन स्टमक, इट इज यूजफुल इन अक्यूट कंडीशंस। उसका मिजाज के माऊ शहीर का बारिद रतब है। और तलबीना हम लोग सब वेरी पॉपुलर, वेरी फेमस recommended diet by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talbina, a specialized diet, is prepared with barley jaw. It is prepared with milk, dry fruits and honey and jaw. It is advised in physical and mental exhaustion. जब भी मरीज को नखात महसूस होती है तो तलबीना का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, यानी मतलब इसके एक्शंस हैं, जिसके अंदर वन बाय वन आई ट्राई टू डिस्क्राइब। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज नेचुरल डायरेटिक, इट इज ए रेमेडी फॉर urinary tract infections, it flushes toxins and infection causing bacteria out of the body. आमतौर पे इसी एक ही मकसद के लिए हम लोग देते हैं बार्ली वाटर। जब गर्मी हो जाती है, यूरिन इन्फेक्शन हो तो बार्ली का पानी पियो बोलते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे और भी हैं। लेट अस डिस्कस देम। फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके अंदर एक बहुत ही हाई इनसॉल्युबल फाइबर होता है जिसको बीटा ग्लूकॉन्स कहते हैं। दिस गिव्स द फीलिंग ऑफ फुलनेस एंड अवॉइड्स ओवर ईटिंग। द वेरी फर्स्ट फंक्शन इज फुलनेस की वजह से, हाई फाइबर जो होता है उसकी वजह से, जिसको बीटा ग्लूकॉन्स कहते हैं, तो ये फुलनेस की फीलिंग लेके आता है। ओवर ईटिंग नहीं हो पाती, इससे मरीज बहुत बार बार भूख का एहसास नहीं होता। इट स्टिमुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, फैट्स के बिकॉज ऑफ हाई फाइबर it stimulates metabolism of fats, prevents the absorption of cholesterol from food in stomach and intestines. ये जो भी फैट कंटेंट फूड के अंदर होता है उसको प्रिवेंशन करता है ये फाइबर। इट इज फाउंड टू बी बेनिफिशियल फॉर रिड्यूसिंग टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और बैड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। तो जितने भी लोगों के अंदर जिनमें आप शायद आप तक तो आपने एडवाइस नहीं करा होगा पेशेंट्स को, तो जिनके जो भी पेशेंट्स के अंदर जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, आप उनके अंदर प्लीज माऊ शहीर का एडिशन करें जो भी ट्रीटमेंट देते हैं उसके साथ। अगर ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है तो नेचुरली इट प्रिवेंट्स एथेरोस्क्लेरोसिस। इट आल्सो कंटेन्स विटामिन बी नायासिन that has been found to help slow the development of atherosclerosis due to its anti-inflammatory and lipid altering effects. It helps lower high blood pressure, another contributing factor for cardiovascular disease and stroke. It controls diabetic. आमतौर पे क्या कहते हैं, ये स्टार्ची है, इसके अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये शुगर को बढ़ा देते हैं, ये कॉन्सेप्ट रहता है ना, लेकिन गलत है। बिकॉज इसका जो बीटा ग्लूकॉन जो हाई इनसॉल्युबल फाइबर है, it helps to slow the absorption of glucose after a meal and reduce the rise in glucose and insulin. तो डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर हम लोग माऊ शहीर खाने के थोड़ी देर पहले इस्तेमाल करवा दें, तो इससे जो भी आप खाएंगे फूड के अंदर उसका जो भी ग्लूकोज लेवल बढ़ना है उसको रिड्यूस कर देता है।
Numerous studies have found that beta glucans can help improve blood glucose control and insulin resistance. It also reduces the risk of obesity, a key risk factor for type 2 diabetes. It is considered a low glycemic index food. Naturally, जो हमारा तलबीना है, हम लोग इसको डायबिटिक्स के अंदर as low glycemic index food दे सकते हैं. The phytochemicals present in barley are also beneficial for controlling diabetes, heart disease, and cancer. It is beneficial for treating digestive problems including constipation, hemorrhoids, and gastritis. Its dietary fiber helps reduce the risk of developing colorectal cancers as it increases the bulk activity and reduces the transit time of fecal matter. It also helps to prevent gallstones by reducing the secretion of bile acid. So these are some other contributing advantages of taking माऊ शहीर. Now coming to the second diet, माउल जुबन. हम लोग आप इतना ही सिर्फ जानते हैं दूध का फटा हुआ पानी, बट इसके अंदर इसको इंग्लिश में वे कहते हैं, WHEY, वे, माउल जुबन. इसके बहुत सारे फायदे हैं. हिपोक्रेट्स के जमाने से इसको इस्तेमाल किया जाता था. Whey is the liquid that is strained off and separated from the curdled milk in making cheese. दूध को हम लोग चीज या पनीर बनाते हैं, उस वक्त जो पानी हम लोग छान के फेंक देते हैं, इसको प्लीज मत फेंकिए. इसके बहुत सारे फायदे हैं. आप इसको मेरे लेक्चर के हो सकता है कि आप लोग इसको कंज्यूम करें. हिपोक्रेट्स यूज्ड वे. आजकल जिम वगैरह में भी इसी का वे का जो पानी है इसको पाउडर की शक्ल में कन्वर्ट करके जिम वगैरह में लोगों को मसल बिल्डिंग वगैरह के अंदर इस्तेमाल कराते हैं. Those days, Hippocrates, he used whey, which he called it serum, to strengthen the constitutional immune system to the disease and aid the adaptive powers of the organism in his patients. Galen also did likewise. In Hippocrates or Galen's days, the liquid whey or serum was used fresh. It's rich in lactose, minerals, vitamins, and special proteins with immune stimulating properties. So this whey contains immune stimulating property. When whey proteins stimulate immunity and protect against cancer, intestinal immunity and beneficial intestinal bacteria are greatly benefited by whey, which is their favorite food, that is probiotic. बॉडी के अंदर जो हेल्थी बैक्टीरिया होता है उसके लिए ये वे क्या है, एक फेवरेट फूड के जैसा काम करता है. It has also helped to increase the tolerance of infants to formulas based on soy or cow's milk. थोड़े बच्चों के अंदर जो लैक्टोस इंटॉलरेंस होता है उसके कंडीशंस में भी अगर आप वे दें तो इट आल्सो क्वाइट हेल्पफुल and lessens the associated colic and allergic reactions. It has been recommended that used therapeutically in hepatitis, skin conditions, infections, edema, arthritis, and rheumatism. It is considered as very good purgative used in bilious condition like jaundice. आमतौर पे ये जितने भी हमारे जो साबुदावी अमराज होते हैं उनके अंदर माउल चुगुन बहुत अच्छा इफेक्टिव होता है. It is considered a very good purgative used in bilious conditions like jaundice. यरखान के पेशेंट्स के अंदर भी हम लोग इसको दे सकते हैं. It is dilute and light, easily absorbable and digestible. Oiliness keeps the organs soft, prevents irritation and forms very good काइम. जयतुल काइमुस बनता है इससे. तीसरा डाइट जो है जो यूनानी में मेंशन्ड है वो है माउल लहम. माउल लहम और आमतौर पे हम लोग घर पे जो बनाते हैं वो सूप होता है, लेकिन ये अर्क के थ्रू डिस्टिलेशन प्रोसेस निकालते हैं माउल लहम. लेकिन आमतौर पे हम लोग जो भी घरों में जो सूप बना के इस्तेमाल करते हैं इट आल्सो हैज द सेम इक्वल प्रॉपर्टीज. This is rich in calories and easily digestible, advised in malnourishment and weak patients. Mutton paya, mutton soup, mutton bone broth, they have many healthy benefits. Like they improve immunity, they have got detoxification property, they make the gut healthy, skin healthy, they protect joints and makes bones stronger, improves sleep, and there are many more. This maul layam helps people feel better. This soup will provide both emotional and psychological lift to the patient. Even now nowadays because of नॉर्थ में जो कोल्ड वेव चल रहा है उसके अंदर भी अगर आप लोग मटन सूप या बोन सूप जो भी बना के पियेंगे तो you'll feel very strong and you'll healthy also physically and emotionally और mentally as well. सब conditions में
बहुत अच्छा काम करता है. When someone is feeling ill or simply feeling sad, mutton soup is sometimes considered as a comfort food. The warmth and the simple taste of the mutton soup can make you feel better not only physically but emotionally and mentally as well. माव राई बटर मिल्क हम लोग सब जानते हैं छाछ जिसको कहते हैं. क्लास में माव राई या बटर मिल्क, इसका मिजाज क्या है, बारिद रतब है. इसे ये आमतौर पे ट्रेड के साथ हम लोग कंज्यूम करते हैं. तो इसकी थोड़ा समर का बेस्ट कंफर्ट डाइट है. तो इसके थोड़े जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हम लोग अभी देखेंगे. Easily observable, cool, and it quenches thirst. It cools your stomach and soothes any irritation, while the ginger and the spices will help tackle the acidity. अगर आप plain माओ तो just has a cooling effect and soothing effect, but if you add some spices, usually आमतौर पे सब कुछ हम लोग मिलाते हैं, जैसे प्याज या फिर हम मिर्च डालते हैं या फिर अदरक कद्दू का छोटा सा क्रश करके डालते हैं. ऐसा सब चीजों से क्या है, इसके अंदर इसके प्रॉपर्टीज बढ़ जाते हैं. Milk-based products are actually best remedies for spice. They contain proteins that neutralize the spice and cool off your system. जो भी आप स्पाइसेस लेना चाह रहे हैं, अगर आप उसको मिल्क बेस्ड फूड के अंदर मिला के इस्तेमाल करें तो इट विल हैव वेरी गुड इफेक्ट. न्यूट्रलाइज करता है उसके जो इरिटेशन होती है उसको. Soothes the stomach after a spicy meal. आपने कुछ स्पाइसी खा लिया है तो अगर आप पीछे से माओ राइब ले लें तो इससे सूथिंग हो जाती है. Drinking it after heavy meal washes down the oil, butter and ghee that coat esophagus and stomach, gives lighter feeling. So आमतौर पे यहाँ साउथ इंडिया में जो साउथ इंडियन मील्स होते हैं उसके बाद में सबको मील्स के साथ में माओ राइब दिया जाता है. So that is actually a very good way so that it will wash off whatever you have eaten like oily things, and it gives esophagus a good coating, and it doesn't cause any irritation. Not only that, it has got some medicinal values also. It is a good source of proteins, potassium and B vitamins, minerals and antioxidants. These nutrients boost immunity, improve sleep, enable hormone synthesis and much more. A study found that the milk fat molecules in buttermilk contain a unique bioactive protein that lowers cholesterol and has antiviral, antibacterial and anti-carcinogenic properties. The same study found that drinking it every day can reduce blood pressure significantly, provided you don't add any much higher quantity of salt to it. Curds और योगर्ट, पहले हमने जो पढ़ा माओ रही था, थोड़ा बहुत जो हम लोग आमतौर पे कर्ड्स खाते हैं उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं हम लोग देखते हैं. It is loaded with probiotics which encourage the growth of healthy gut flora. It improves digestion and immunity. Adults require 1000 to 1200 milligram of calcium per day to maintain healthy bones and teeth. 1 cup of milk contains 300 milligram of calcium, while 1 cup of yogurt contains about 420 milligram of calcium. Adding just 1 glass of it to daily diet can boost calcium intake by 350 milligram. Next is a very important another nutritional diet, that is maul asl, honey water. Here honey is boiled with water and sometimes with herbal decoctions. आमतौर पे जो हम लोग फालिज के मरीजों के अंदर जो उसूल इलाज है उसमें सबसे पहले अगर स्ट्रोक हुआ है तो इमीडिएट मरीज को खाने पीने से ग़िज़ा से बंद करके उसको सिर्फ 3 दिन तक माउल असल देने का जिक्र आता है किताबों के अंदर. अगर हम लोग इसमें मेडिसिनल डिकॉक्शन जैसे उस्तखुद्दूस बादरंज बोया का डिकॉक्शन बना के उस डिकॉक्शन से हम 1:3 और 4 के प्रोपोर्शन में अगर माउल असल तैयार करें तो दिस विल बी वेरी इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल इन स्ट्रोक पेशेंट्स. इसका मिजाज क्या है, हार याबीज यूज्ड इन अमराज सौदा. एरोमेटिक ड्रग्स आर एडेड टू इंक्रीज हरारत को और बढ़ाने, आमतौर पे हरारत को और बढ़ाने के लिए इस माउल असल के अंदर हम लोग कुछ एरोमेटिक ड्रग्स जो हार मिजाजी हैं जैसे मर्जन जोश है इसका और उस्तखुद्दूस आल्सो इज वेरी एरोमेटिक. इन सब के एडिशन से क्या है, हरारत और बढ़ाते हैं ताकि फालिज के मरीजों के जो आमतौर पर जो
बारिद मिजाज या बुरुल ज्यादा होती है उसको कम करने के लिए. It expels bulgum. It is useful in fever, irritation, thirst, and in dry cough. It has its ability to aid weight loss, improves the body's immunity. Not only that, it protects respiratory health. It boosts immune system, reduces the allergic response of the body. The most well-known use for honey water is as a remedy for respiratory issues such as sore throat, coughing, or sinus condition. Here, you can add some drugs which are beneficial in the upper respiratory infection, like simple remedies like you can use long, pepper, फिलफिलेस जराज या फिलफिलेस या जंजबील का इस्तेमाल. इन सब को अगर आप थोड़ा सा पाउडर करके ये जो माउल असल है उसमें डाल के इस्तेमाल करें तो इससे बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है. This combination of warm water and honey can help clear out the sinuses, soothe inflammation in the respiratory tract, and suppress coughs. So one more here for sinus problem you can do is त्रिफला का जोशांदा बना के उस जोशांदे से आप मावल असल तैयार करें मरीजों को दें. इससे साइनसेस में और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो भी इन्फ्लेमेशन उसमें बहुत फायदा होता है. Not only that, it aids in digestion. Honey in every form is known for its anti-inflammatory effects on the body, particularly on the stomach. If suffering from nausea, indigestion, cramping, bloating, excess flatulence, or any other gastrointestinal problems, a daily dose of honey water can quickly soothe those irritating and uncomfortable symptoms. This can help improve nutrient uptake efficiency. This beverage is also known to increase metabolism and which can increase passive fat burning, further aiding weight loss efforts. This consuming maul asal ya honey water is a common practice in those clinics where they give weight reduction therapies. Honey has powerful antibacterial qualities aided by presence of hydrogen peroxide. In addition to this, honey has good levels of vitamin C, which can help to stimulate the production of white blood cells and defend the body against foreign agents and infectious pathogens. It strengthens cardiovascular health. Now coming to another very important दवा ग़िज़ाई की जो मिसाल है उसमें है सिरका. Vinegar is a liquid consisting of about 5 to 20% acetic acid, water, trace elements, and flavors. It has been used as a treatment for many different ailments since the time of Bakrat, around 420 BC. Vinegars are often used to promote digestion and support liver health. Acetic acid in vinegar or sirka will extract a certain amount of fat-soluble constituents. Vinegar is also made with the help of microorganisms that ferment sugars and convert them into acetic acid. Basically ये fermentation के बाद ही तैयार किया जाता है. इसके बहुत सारी मिसालें हैं जैसे हमारी किताबों में जामुन का सिरका, गन्ने का सिरका, चने का सिरका बहुत सारे मेंशन्ड हैं. Vinegar is made from different fruits, as I told you, rice, barley, and other foods that are high in sugar content. Some examples are rice wine vinegar, apple cider vinegar, white distilled vinegar, balsamic vinegar, fruits vinegar के अंदर जामुन का जो सिरका आता है वो या गन्ने का जो आता है वो. Depending on type, they contain slightly different levels of acidity. Vinegar is a source of dietary polyphenols. इसके अंदर polyphenols बहुत होते हैं, which are antioxidants and defend against oxidative stress. It also increases satiety levels, indicating its fullness in weight control. इससे पेट भरा हुआ महसूस होता है इसके कंज्यूमिंग से. तो इसे वेट रिडक्शन में आप जो भी मरीजों को सुबह मोहजिल दे रहे हैं या खैज़ीरा दे रहे हैं, अगर इसके साथ आप सिरके का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो पेशेंट को वेट लॉस में बेनिफिशियल होता है. It is an antioxidant and it contains an antioxidant called chlorogenic agent which prevents low LDL cholesterol molecules from becoming oxidized, helping to lower low density levels in cholesterol. Vinegar inhibits tumor growth and prevents cancer. It also is antimicrobial and prevents infections. It helps with allergies. Vinegar helps to reduce acid reflux and heartburn. The acetic acid in vinegar reduces blood sugar content. तो सिरके के बहुत सारे ये फायदे हैं
हमारे प्रॉफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे उनको उनकी फेवरेट ग़िज़ा थी ये सिरका, और बहुत सारे के तिब्बे नबवी में आपको बहुत सारे इसके फायदे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है सिकंजबिन। ये सिरका और शहद से बनी हुई चीज जिसको ऑक्सीमल कहते हैं इंग्लिश में। A common medicinal preparation that dates back to antiquity in सिकंजबिन। बहुत पुराने जमाने से, बहुत जमाने दराज से इसका इस्तेमाल होता है। मिक्सचर ऑफ हनी एंड विनेगर। It has many uses and is part of many traditional medicines. It is useful in purging out thick कायम, रद्दीउल कायमूस का जो मादा मैदे के अंदर होता है उसको ये बाहर इखराज करने में बहुत मदद करता है। It is a soothing medicine. It expels सफरा and bile. It acts as एमेटिक। अगर आप मरीज के अंदर इसको ख्याल आना चाह रहे हैं तो उसको गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कराएं तो स्टिमुलेशन लेके आके वो उल्टी करा के मैदे को साफ करता है। अगर बहुत ही ज्यादा मरीज को उल्टियां हो रही हैं तो इसको एक ठंडे पानी के में मिला के दिया जाए तो वो इट एक्ट्स एज एन एंटी एमेटिक। आमतौर पे मैं जो पेशेंट्स मेरे पास जो हाई मॉर्निंग सिकनेस के आते हैं उनके अंदर मैं विनीगर ये जो सिकंजबिन के आइस क्यूब्स बना के उसको चूसने के लिए कहती हूँ। इससे उनके अंदर बहुत ज्यादा जो नौसिया जो होती है उनको इसमें रिलीफ मिल जाता है। सिकंजबिन के मरीज को बोल दें सिकंजबिन दे दें, फ्रिज में रख के उसके आइस क्यूब्स बना के इस्तेमाल करें तो इट गिव्स अ वेरी गुड एंटी एमेटिक इफेक्ट। Oximal or sikanjabin is basically just honey and vinegar. There are several different methods or recipes for preparing it. The simplest method is to just mix 4 parts of honey with 1 part of sirka. Apple cider vinegar is the most commonly used. A more elaborate recipe is to thoroughly mix together 1 part of sirka, 1 part of water and 2 parts of honey, and add some fresh pudina leaves and crushed ilaichi. To enhance its flavor, you can add some pudina leaves and crushed ilaichi. मोरेवर हमारे किताबों में बहुत सारे सिरके के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे सिरका लेमोनी, सिरका नानाई, सिरका उनसुली, बहुत सारे हैं। This mixture, it slowly, it is until it is only what you have to do is I'll tell you the procedure how to prepare the sikanjabin. You take 1 part of vinegar, 1 part of water, 2 parts of honey. To that you add few pudina leaves and some few ilaichi ke dane, crushed ilaichi ke dane. Then you keep it on stove and you simmer it in a very low heat. Slowly you have to bring it to a boil, and when 1/3 of its original volume remains, जब उसको थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए उसको उतार के रख लें तो ये बन जाता है आपका सिकंजबिन। इट ऑल्सो यू शुड कीप इट हैंडी। घरों के अंदर इसको हैंडी रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक रिफ्रेशिंग मेडिसिनल ड्रिंक है। समर के अंदर इट एक्ट्स एज अ वेरी गुड कूलिंग एजेंट। बोथ इट इज रेस्टोरेटिव एंड एनर्जाइजिंग एंड अ कूलिंग फेब्रिफ्यूज, पर्टिकुलरली फॉर इंटरमिटेंट फीवर्स। अगर बच्चों के अंदर या घरों में किसी को बुखार है तो आप सिकंजबिन को थोड़ा सा पानी में मिला के पिला दें, इससे बुखार भी कम होती है। गार्गलिंग विद दिस सूथ्स एंड हील्स अ सोर थ्रोट। Did you know that सिकंजबिन से अगर गार्गलिंग करें तो इससे सोर थ्रोट भी कम होती है। It greatly aids in expectoration of excess phlegm, बलगम को निकालने में, and from the lungs and the respiratory tract. It opens the airways and makes breathing easier. It can be mixed into any joshanda or hot expectorant herbal teas to enhance their effects. Next, very important, very popular, very easily available, बहुत सारे लोगों को खाने का शौक होता है गुलकंद और बटर मिला के, लेकिन इसके फायदे क्या है उसको थोड़ा बहुत हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। Usually it is preserved in rose petals preserved in sugar syrup or honey to form a jam, useful in fever. It is a good laxative, a liver and heart tonic, and in large quantity it is purgative. अगर बहुत ज्यादा मिकदार में आप दे देंगे तो वो मुश्किल का काम करता है। Gulkan has been traditionally used as a cooling tonic to fight fatigue, lethargy, muscular aches, biliousness, itching and heat related conditions. जितने भी सफरावी और जिगर के अमराज होते हैं उसके अंदर आप गुलकंद का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत फायदा होता है। It is good for memory and eyesight as well as a good blood purifier. It is very rich in calcium. It is a powerful antioxidant and a very good rejuvenator.
Consuming 2 teaspoon of gulkan helps to reduce acidity and stomach ache. It also helps in treating ulcers and prevents swelling in the intestine. Gulkan helps to treat mouth ulcers, strengthen teeth and gums. It is used to treat dysmenorrhea and it is effective in relieving menstrual pain. It is also helpful in treating excessive white discharge problem. Very good digestive tonic. It helps to improve appetite, digestion, and corrects digestive problems. It helps to remove toxins from the body and purifies blood. This thus it helps in अगर मरीज को आप हल्के से मुस्किल का देना चाहते हैं तो गुलकंद इज दी बेस्ट. हंसी खुशी से मरीज खा भी लेता है, उसको ज्यादा तकलीफ भी नहीं होती, ज्यादा मरोड़ या टेनसमस भी नहीं होता, हल्के से ये मुस्किल का काम कर देता है. It helps in giving clear complexion and prevents the occurrence of various skin problems like acne, boils, whitehead, etc. It helps to reduce excessive perspiration and foul body odor. Having 2 teaspoons of gulkan before venturing outdoors can help to prevent sunstroke and control nostril bleeding. ये जो एक्सट्रीम समर होता है, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो 2 चम्मच गुलकंद खा के बाहर निकलें तो आपको इसका जो साइड इफेक्ट है, जो एक्सट्रीम धूप का या टेम्परेचर का, वो नहीं होगा. It helps in increasing your urine output, has a calming effect on the nervous system, thus helps in reducing stress. Now coming to another commonly very popular form, अर्क़े गुलाब. हम लोग इसको सिर्फ किसी के अंदर ऐड एज एन एक्सिपिएंट ऐड करते हैं या इसके खुशबू के लिए ऐड करते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे हैं, वो भी देखते हैं. दिस इज नॉट जस्ट फॉर परफ्यूमिंग. The plant contains several components. I mean, not the plant, but it is about the rose. You have mentioned जो है गुल सुर्ख के बारे में है, such as terpenes, glycosides, flavonoids, and anthocyanins that have beneficial effects on health. अर्क़े गुलाब के बहुत सारे medicinal benefits हैं, like it is an analgesic, bronchodilator, treats reflux, anticonvulsive, antimicrobial, as an anti-inflammatory. It has also been used as cough syrup, as a dry cough के अंदर बहुत सूथिंग होता है इसका लेना, and to reduce blood sugar also. माउल फवाके, आई थिंक बहुत सारा टाइम ले लेगा, मैं इसको स्किप कर देती हूँ. चंद स्लाइड्स हैं जो फ्रूट जूसेस के बारे में. इसके मफादे तो सबको मालूम है फ्रूट जूसेस के बारे में. तो जैसे पहले आबे अनार के बारे में है, मैं अपना पीपीटी शेयर कर देती हूँ टू द ऑर्गेनाइजर. आप लोग इसको ले सकते हैं बिकॉज आई शॉर्टेज ऑफ टाइम और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी, तो मैं ये फ्रूट जूसेस को स्किप कर देती हूँ. एवोकाडो जूस, एप्पल जूस, स्ट्रॉबेरी जूस, ऑरेंज जूस, कीवी जूस, टोमेटो जूस, guava जूस, मैंगो जूस, एंड आई विल टेल अबाउट दिस नूनी जूस. मोरिंडा सिट्रीफोलिया एक फल होता है जिसको नूनी कहते हैं. इसका इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी है, मतलब इसके अंदर इतने सारे एंजाइम्स होते हैं और बहुत ही ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन मेडिसिन के हर्बल गार्डन में हम लोग ने इसको ग्रो करा है, लेकिन अभी तक इसका जूस नहीं बना पाए. इट्स अ गुड फॉर डिजीजेस लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, vaginal discharge. It helps to develop immune system. Its juice also acts as anti-cancerous. Lower blood pressure it lowers blood pressure by clearing blockages in the arteries. It is good anti-inflammatory and anti-allergic due to the presence of scopolamine. इसका अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल में नूनी मोरिंडा सिट्रीफोलिया के बारे में आप सर्च करो, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको. कमिंग टू अनदर इम्पोर्टेंट लिक्विड डाइट, नबीज. नबीज तो बहुत ही कॉमनली यूज होता है. द एंशिएंट ग्रीक्स यूज्ड वाइन both as food and as medicine and as an ingredient of or medium for taking of medicines. They made medicinal wines by soaking various herbs in wine. The most famous medicinal wine is वर्मत. वर्मत का मतलब जिसके अंदर आप अफसंतीन को उसके अंदर सोक करके जो इस्तेमाल करते हैं उसको वर्मत कहते हैं, जिसमें रेड वाइन यानी अंगूर का जो शराब होती है उसके अंदर उसको भिगो देते हैं. आमतौर पे वर्मोट बुखारत के जमाने से इस्तेमाल होता था. इट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर जॉन्डिस, रूमेटिज्म, एनीमिया एंड मेंस्ट्रुअल पेन्स. Ancient Greeks also believed that absinthe wine. Pardon?
द एंशिएंट, सॉरी बीच में मुझे डिस्टर्ब हो जाता है इस तरह से, फ्लो जो है जो खत्म हो जाती है. द एंशिएंट ग्रीक्स आल्सो बिलीव दैट एब्सेंथिन वाज एन, एब्सेंथिन का जो नबीज बनता है हैज एन एंटीडोट अगेंस्ट द पॉइजन ऑफ शुक्रान, हिमलॉक एंड मशरूम्स. उसका एंटीडोट है. इट इज मेड बाय सोकिंग अ हैंडफुल ऑफ एब्सेंथिन इन अबाउट 3.5 liters ऑफ रेड वाइन for a month or longer in a well-stopped jar. Absinthe is also called as wormwood. Gets its name from being a vermifuge. ये खतीले किर्म होने की वजह से इसको वर्मवुड कहते हैं. और an herb used to expel intestinal worms and parasites. It calms an agitated, irritated, inflamed or hyperacidic stomach and it's a cholagogue which stimulates the flow of bile. Yes, सफरे के इखराज में भी मदद करता है. It is useful for many bilious liver and gallbladder problems and restores the appetite. Please kindly mute your speaker. It's quite disturbing here. It is also a febrifuge. बुखारों में भी आप अफसंथीन का बनाया हुआ नबीज दे सकते हैं. इम्यूनोकॉक है ना, ये मुदर हैज भी है. दिस इम्प्रूव्स द मेंस्ट्रुअल फ्लो, हैजन्स चाइल्ड बर्थ एंड एक्सपर्स ऑफ द आफ्टर बर्थ मैटर. डिलीवरी के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसके एक्सपेल करने में भी ये काम आता है अगर अफसंथीन का नबीज बना के दे दो. मोस्ट ऑफ द टाइम वाइन वाज मिक्स्ड विथ वाटर बिफोर ड्रिंकिंग. द ऑर्गेनिक एसिड्स, एंजाइम्स एंड फर्मेंट्स इन वाइन स्टिमुलेट डाइजेस्टिव एसिड एक्टिविटी. ये जो आमतौर पे हम लोग जो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है उससे क्या होता है, बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स एंड एंजाइम्स फॉर्म होते हैं. एंजाइमेटिक लिक्विड कहते हैं इसका दूसरा नाम जो नबीज के लिए है, उसको एंजाइमेटिक लिक्विड्स भी कहते हैं. ये एक्चुअली दिस इज ऑल्सो, चूंकि इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं तो बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव एक्टिविटी बहुत अच्छी तेज स्टिमुलेट होती है. If we steep herbs, they benefit and stimulate the digestion in wine to create medicinal wines. We synergistically multiply both the effects of the wine as well as those of the herbs. So एक synergistic action आ जाता है अगर हम लोग जो herbs जो हाजिमे के लिए stimulate beneficial है, अगर उसको हम wine के साथ steep करें तो. The alcohol and organic acids in the wine are great at extracting the active medicinal constituents of the herbs. आमतौर पे आजकल बहुत ज्यादा वो व्हाट्सएप में मैं देखती रहती हूँ, नबीज के बारे में मेंशन होता है कि खजूर, बादाम और तिल, ये तीनों का इस्तेमाल करवा रहे हैं. जो रात में भिगो की सुबह में पीते हैं उसको नबीज समझते हैं, लेकिन थोड़ा जब तक उसके अंदर फर्मेंटेशन नहीं आता आप उसको नबीज नहीं कह सकते. The other bitter tonics that have been used in wines, नबीज के अंदर हाफिज यूज हुआ है. कासनी, आप बखारों में आप हाफिज यूज कर सकते हैं. जिगर के अमराज में कासनी यूज कर सकते हैं. डैंडेलिन भी कासनी का सब्स्टिट्यूट है. रुबाब, रेवन चीनी, रेवन भी यूज कर सकते हैं. बच भी यूज कर सकते हैं. सब आप वाइन्स के अंदर सोक करके मरीज को दे सकते हैं. बिकॉज दीज हर्ब्स आर क्वाइट बिटर. उनके टेस्ट को एनहेंस करने के लिए आप उसके अंदर थोड़े दूसरी चीजों को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे सौंफ, असलसूस, इलायची, दारचीनी या जंजबील, उसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए. फुखा और बीर, ये फुखा और नबीज में थोड़ा बहुत फर्क होता है. गुड क्वालिटी फुखा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम व्हाइट ब्रेड, मिंट एंड सेलरी और करफ्स. फुखा है ना, ये रोटी को के अंदर पुदीना और थोड़े बहुत जो स्पाइसेस वगैरह होते हैं उसको डाल के हम लोग जो एक फर्मेंटेड बनाते हैं उसको फुखा कहते हैं. It produces good chyme and suitable for hot temperament people. The health benefits of Fukha include anti-cancer properties. It reduces the risk of cardiovascular diseases, increases bone density, aids digestive system and anti-aging properties, as well as treats diabetes, gallstones, kidney stones, osteoporosis and hypertension. आप कामा एकांजी, हम लोग इसके बारे में भी जानते हैं लेकिन कभी बना के नहीं दिया होगा पेशेंटों को. It is prepared by fermenting roti and spices. They are powerful herbal combinations, enhances digestive system. इसके अंदर क्योंकि बहुत सारे स्पाइसेस और रोटी को डाल के फर्मेंट करते हैं तो इससे बॉडी के अंदर जो आपका मकान है उसके अंदर भी दोबारा ऑर्गेनिक एसिड्स और एंजाइम्स फॉर्म होते हैं जो डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं. They eliminate accumulated. फोन ही नहीं किया, अगर जाएगा तो आप बताएंगे तो उसको नंबर पर. Please mute your speaker.
It eliminates accumulated toxic waste material from the body. It facilitates absorption of nutrients to the body. Weak digestion is the basis of many diseases. So इसको हाँ आप कमा एकांजी जो जो मरीजों के अंदर हाजिमे की कमजोरी होती है या जिन लोगों के अंदर आप हाजिमा ज्यादा भूख कम होती है ऐसे लोगों के अंदर आप कामा एकांजी इस्तेमाल करा सकते हैं। फंदी खून अब थोड़े बहुत जो यूनानी के जो हम लोग बहुत ही ज्यादा फेमिलियर नहीं डाइट से उसके बारे में एक दो सेंटेंसेस में मैं बताऊंगी। फंदी खून इज प्रिपेयर्ड विद ओल्ड शराब और वाइन ड्राई सौंठ के साथ कार्डमम क्लोव्स दालचीनी पेपर एंड हनी। ये शराब के अंदर इन सारे चीजों को आप अगर स्टीप करके डाल दें तो इसे एक जो दवा बनती है उसको फंदी खून कहते हैं। ये खासकर कॉलिक पेन के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है जिसके अंदर जो नफक शिकम होता है उनके लिए सब बहुत फायदेमंद है। हरीसा दिस इज प्रिपेयर्ड बाय पाउंडिंग व्हीट एंड मीट। ये कसीरुल तग़ज़िया होता है। एफिकेसी इज एनहांस्ड बाय एडिंग मिल्क एनर्जाइजेस एंड स्ट्रेंथन्स दोज इंडिविजुअल्स डूइंग लेबोरियस वर्क। जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं अगर ये इस तरह का हरीसा बना के इस्तेमाल करें जिसके अंदर गोश्त और गेहूं का इस्तेमाल होता है बहुत ज्यादा और उसके अंदर अगर दूध डालें तो और भी एनर्जी बढ़ जाती है। ये हरीसा है। सिकबाज हमने ये सब सारे अल्फाज सिर्फ जो पीजी के लिए तैयारी करते हैं उस वक्त हमने सिर्फ पढ़े हैं लेकिन इसके बारे में थोड़ा बहुत ही जानते हैं। सिकबाज इज अ टाइप ऑफ करी प्रिपेयर्ड विद मीट एंड सिरका। अगर दूध गोश्त और सिरका को मिला के बनाए तो इसको सिकबाज कहते हैं। ये बारिद मिजाज होता है और खाते सफरा है मुसक्किन दम है। यूज्ड इन हार मिजाज इंडिविजुअल्स इन वर्म कबीर बेनिफिशियल आफ्टर फस्द एंड हिजामा। मरीजों में सिकबाज इस्तेमाल करें हिजामा और फस्ट के बाद तो मरीज के अंदर जो नहात है वो खत्म होती है। ज़ीरबाज इज अनदर टाइप ऑफ शोरबा प्रिपेयर्ड विद सिरका ड्राई फ्रूट्स सिरका ड्राई फ्रूट्स ज़ाफ़रान जीरा एंड अदर स्पाइसेस। जो शोरबा तैयार होता है उसके अंदर अगर आप सिरका ड्राई फ्रूट ज़ाफ़रान जीरा एंड अदर स्पाइसेस ऐड करें तो इसको ज़ीरबाज कहते हैं। ये मोतदिल प्लीज म्यूट योर स्पीकर्स। इट इज मोतदिल इन तग़ज़िया यूज्ड एज लिवर एंड स्टमक टॉनिक। ज़ीरबाज को जिगर के अमराज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। हसर मियाँ किसको कहते हैं? वो ग़िज़ा जो अंगूर के रस के साथ बनाई जाती है। ये हसर मियाँ ग़िज़ा है जो अंगूर के रस के साथ बनाई जाती है। ये खाते सफरा है और मुसक्किन दम है। जल्दी अमराज के अंदर बहुत फायदेमंद है। मजीरा है प्रिपेयर्ड विद कर्डेड मिल्क। जो छाछ के साथ जो बनता है उसको मजीरा कहते हैं। वो बारिद और गलीज इसका मिजाज है। कसीरुल तग़ज़िया है। यूज्ड इन गरम मिजाज एंड वीक पीपल। यूज्ड इन हुम्माए मौरिखा एंड ग़िब। जितने भी ये हुम्माए मौरिखा है और ग़िब है इसके अंदर मजीरा का इस्तेमाल है। जो दूध फाड़ के इस्तेमाल कराते हैं उसके जो ग़िज़ा तैयार होती है उससे वो। मसलिया इज कर्ट्स राइस इट इज इफेक्ट्स आर सेम एज मजीरा। अस्फीदाजात ये एक तरह का गोश्त का शोरबा है जिसके अंदर कोई स्पाइसेस नहीं ऐड करते। जस्ट प्लेन गोश्त को जो वो पका के उसका शोरबा निकालते हैं उसको अस्फीदाजात कहते हैं। ये मिजाज में हार है। कसीरुल तग़ज़िया है। मखवी बदन है। ठंड के मौसम में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। बहुत फायदेमंद है। हेमेटेनिक है। खून को बढ़ाता है। एनर्जाइजेस एंड स्ट्रेंथन्स द बॉडी। इट ब्रिंग्स ग्लो टू द स्किन। नेक्स्ट है फालूदा प्रिपेयर्ड विद स्टार्ची और जेलाटिनस सब्सटेंसेस मिल्क एंड शुगर। न्यूट्रिशियस होता है। इजीली डाइजेस्टेबल। यूज्ड इन चेस्ट एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस। मरीजों के अंदर जो खांसी या ड्राई कॉफ होती है चेस्ट के अंदर जो प्रॉब्लम होती है उनको तो ऐसे कंडीशंस में अगर आप न्यूट्रिशियस डाइट देना चाहते हैं तो ये बना के इस्तेमाल करा सकते हैं। इन दोज इंडिविजुअल्स हैविंग वीकनेस आफ्टर इस्तफरा उन लोगों के अंदर फालूदा खिलाते हैं। फिरनी वेरी कॉमन एंड पॉपुलर प्रिपेयर्ड विद राइस एंड मिल्क। न्यूट्रिशियस है। मखवी बदन है। हेमेटेनिक है। मुजाहिद मनी है। अल खबीज इज प्रिपेयर्ड विद मिल्क क्रीम मैदा एंड डेट्स। इट इज लाइटर देन फालूदा। ये भी एक तरह का डाइट है जो दूध मैदा और खजूर के साथ तैयार किया जाता है। फालूदा से भी थोड़ा हल्का होता है मिजाज में। ये सारे जो मैं अब यूनानी के जो नुस्खे ग़िज़ा के जो तरीके बता रही हूँ ये सारे मैंने किताबुल मंसूरी से लिए हैं कि
जकरिया राजी की जो किताबुल मंसूरी है उसके अंदर मेंशन है सब डाइट्स। पनीर माया शुतुर अरबी वही सबको मालूम है कि ये मुरकबुल खुआ है, डिजॉल्व्स मुंजमिद खिल्त, इट सॉलिडिफाइड्स डाइल्यूट खिल्त, ये लतीफ एंड खुश्क है, ये आम तौर पे ज्यादातर ये मिर्गी और सरा में देते हैं। इट इज हाबी से मैदा यूज्ड इन डायरिया ड्यू टू अननोन कॉज। पनीर माया बनाने का तरीका तो सब लोगों को मालूम है कि ये एक बछड़े को दूध पिला के फिर उसके बाद में उसका पेट चाक करके जो अंदर से वो जो दूध निकाल के उसको बनाते हैं उसको पनीर माया कहते हैं। सब जो पनीर बनती है वो पनीर माया है। मजूरात है ना, ये वेजिटेबल्स के जूसेस को कहते हैं। आमतौर पर मजूरात वेजिटेबल जूसेस को कहते हैं, लेकिन ये मवेज मुनक्का शक्कर और शहद से बनती है। ये नबीस के जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये मुनक्का और मुनक्का को आप भिगो के रख दें, साथ में अगर शायद आप चाहे इंजीर भी डाल सकते हैं मुनक्का के साथ, और खजूर डाल के अगर भिगो के रखे उसमें शहद मिला के इस्तेमाल करें तो ये मसूरात के तौर पे यूज होता है। नबीस के बदन में यूज कर सकते हैं। इट डज नॉट कॉज इंटॉक्सिकेशन। नेक्स्ट है रुब के बारे में। रुब तो सब लोग जानते हैं, हम लोग आमतौर पे मुरब्बे खाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो बहुत फायदे हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन, ज्यादा डिटेल में नहीं है। आई विल बी कंक्लूडिंग माय अनदर 5 मिनट्स। रुब सफरजल एंड बिही खाबिज है, मुखवे मैदा एंड क्वेंचेस थर्स्ट। रुब अनार खाबिज एंटी एमेटिक यूज्ड इन सुद्दाए हार। क्या आप लोग सुद्दाए हार में कभी सफरावी जो हेडेक होता है उसके अंदर कभी रुब अनार दे के देखिए, इसका रिजल्ट मिलेगा आपको। जो पेशेंट्स के अंदर माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है या IBS है उनके अंदर आप रुबे बिही देकर देखिए, रुबे सेब देकर देखिए, और खासकर रुबे सेब है ना खफकान के लिए, सोजिश मैदा और मतली के लिए। इसके अलावा ये सारे चीजें वो प्यास को मिटाते हैं, लूज मोशन बंद करते हैं और उल्टियों को बंद करते हैं। डाइट्स प्रिपेयर्ड विथ वीट, ये थोड़े बहुत हैं। हलवा एंड हरीसा, हरीरा गेहूं से बनने वाली, यूज्ड इन अमराज हाथ एज इट इज इजीली डाइजेस्टेबल। सत्तू, फतीर, खुशकार या मतखूफ, ये सारे अलग अलग डिफरेंट डाइट्स हैं। टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से मैंने सिर्फ मेंशन कर दिया है जो गेहूं से तैयार होते हैं। उसके बारे में आई थिंक अगर टाइम है तो मैं 5 मिनट्स और ले लूंगी। प्रोबायोटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत कहना चाहती हूँ। द वर्ड प्रोबायोटिक इज ए कंपाउंड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। ये भी देखिए प्रोबायोटिक 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया है। प्रो मीन्स टू सिग्निफाई प्रमोशन एंड बायोटिक मीन्स लाइफ, which the product that compound which promotes life is probiotic. These are microorganisms that are believed to provide health benefits when consumed. Probiotics are live bacteria and yeast that are good for health, especially digestive system. Our body is full of bacteria, both good and bad. Probiotics are often called good or helpful bacteria because they help to keep the gut healthy. What are prebiotics and synbiotics? Prebiotics come before and help the probiotics. It's actually prebiotic is a diet for this healthy bacteria. Then the two combine to have a synergistic effect known as symbiotics. A prebiotic is actually a non-digestible carbohydrate that acts as food for probiotics and bacteria in the gut. And actually what happens, this prebiotic, whatever you take, it does not get digested in the stomach, but it goes into the intestines and it stays in the intestines, gets fermented, and that fermented matter becomes a food for the probacteria. They act as a remedy for GI complications such as gastrointestinal complication, enteritis, constipation, and irritable bowel disease, decreasing allergy and inflammation, treatment of non-alcoholic fatty disease, and fight immune deficiency diseases. Most of the prebiotic are identified as polysaccharides. They are resistant to the human digestive enzymes that work on other carbohydrates. They pass through the upper GIT system without being digested. They get fermented in the lower colon and produce short chain fatty acids that they nourish the beneficial microbes that live there. These sources include थोड़े बहुत examples हैं: asparagus, artichoke, bamboo shoots, banana, barley, chicory is kasni, garlic is लहसुन, honey, lentils और pulses जो भी हम लोग खाते हैं, milk, mustard, onion, soybean, sugar, beetroot, sugarcane juice, tomato, wheat. These are all prebiotics which they form diet for probiotics.
So I'll skip this. Antioxidants, everyone knows about it. So I don't want to go into this antibiotics. Most of the foods which contain carotenoids like beta carotene, lycopene is found in tomato, and vitamin C. They are all antioxidants. Antioxidants rich herbs such include garlic, cyan is pepper or capsicum, and green teas. These are all antioxidants. And much of information you can take it from the net. What do the antibiotics, these antioxidants do? They slow the sign of aging. They bring youthfulness and glowing skin. They reduce cancer risk, detoxification. They improve the lifespan. They protect against heart disease and stroke. They are less risk for cognitive problems such as dementia. Reduce risk for vision loss or diarrhea and disorders like macular degeneration and cataracts. Antioxidants are also added to food or household products to prevent oxidation and spoilage. So, some of the uses of antioxidants. Now, coming to the conclusion, well balanced and correct diet is thus of utmost importance for the maintenance of good health and the healing of diseases. Diet therapy plays an important role to treat and to prevent diseases. Diet therapy minimizes the duration of treatment, improves the drug tolerance by slight modification in diet or proper management of diet. In chronic illnesses like diabetes, hypertension, renal diseases, modified diets help in preventing complications and improve the health condition. These are some of the classical books which I referred while preparing this presentation. Kitab Al-Jami al-Mufrad al-Aladiyya al-Aghziya by Ibn Betar, Zakhir-e-Kharzam Shahi by Muhammad Ismail Jurjani, Tarjuma-e-Kabir by Hakim Kabiruddin, Talif-e-Sharifi by Hakim Sharif Khan, Mufar-e-ul-Khulub by Hakim Muhammad Akbar Arzani, Kitabul Kulliyat by Ibn Rushd, Kitabul Mansuri by Zakaria Razi, Ilaj ba Zariye Ghiza by Hakim Ehtashamullah Qureshi. So I had taken references from all these books. I have prepared this presentation. Hope this presentation must have been beneficial to you people. So with this, I'll try to conclude my presentation. Here also, I have just given the importance of fruits and vegetables and the spices in my presentation of thank you. If you got any questions or doubts, you can ask me. I'll stop sharing this slides now. Ayman कैसा okay. वापस जाना कैसा Ayman? Any question? Please be. वालेकुम सलाम. मैम सुबह सुबह जो एलर्जी होती है मोस्टली पेशेंट स्नीजिंग का कंप्लेन करते हैं. हाँ हाँ. और जॉइंट पेन एट द ओल्ड एज 40 प्लस में हम लोग जॉइंट पेन पेशेंट्स के लिए क्या इजीली सजेस्ट कर सकते हैं स्नीजिंग एंड डाइट के अंदर. यस मैम. डाइट टी एंड ऑल जूसेस. स्नीजिंग तो बहुत ज्यादा कंप्लेन. सुबह सुबह में जो मरीजों को जो स्नीजिंग होती है कोल्ड है तो वो तो एलर्जिक राइनाइटिस के लिए है वो. उसके अंदर आप जो भी ग़िज़ा मैंने जिसके अंदर हर क्वालिटीज होते हैं, जैसे सिकंजबिन का ही मैंने मेंशन किया था, रेस्पिरेटरी चेस्ट को खोलती है, तो उस तरह का इस्तेमाल, या फिर माओल असल का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है साइनसिस के प्रॉब्लम में. मैं यहाँ पे दवाओं के बारे में नहीं बोलूँगी, सिर्फ डाइट के बारे में बताऊंगी. इसके अलावा जो अपने आर्थराइटिस के पेशेंट्स में बताया, उनमें सबसे पहले आप डाइट रेस्ट्रिक्शन जो देने से के अलावा सबसे पहले आप उनमें डाइट को परहेज कराओ. सारे जो भी फूड्स जो मरीज के अंदर जो इन्फ्लेमेशन लेके आते हैं, जैसे सारे नॉनवेज फूड्स के अंदर जो सही तरीके से हजम नहीं होते बॉडी के अंदर, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रद्दी मवाद बनते हैं, उसको अगर आप कम करें तो आप देखिए 50% क्लियर हो जाता है. उसके अलावा है ना, बॉडी का तनखिया वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी आई हैव सीन. आमतौर पे आप मुंजिद मुस्सिल का जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करें. मीन सारे क्रॉनिक डिजीजेस के अंदर थोड़ा बहुत, अगर आप लोग कभी मुझे और मौका मिला तो मैं आप लोगों को मुंजिद मुस्सिल के बारे में भी एक चाहे तो प्रेजेंटेशन लेके बताऊंगे. क्रॉनिक डिजीजेस के अंदर आप जो कॉन्सेप्ट है मुंजिद मुस्सिल का उसको लेके चलेंगे तो डेफिनेटली बॉडी का जब तनखिया हो जाता है, इससे मरीज के अंदर 50% के करीब सारा जो सिम्टम्स है क्लियर हो जाते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो वेयर एंड टेयर हो चुका है, जो नी जॉइंट्स में आमतौर पे इट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस,
जो एज रिलेटेड है, वेट की वजह से होता है, उनके नेचर ऑफ लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसको लेते हुए आप लोग है ना, जो भी हमारे जो किताबों में मेंशन है एंटी इन्फ्लेमेटरी जो मौजूद वजह मुफासिल वगैरह में दिए जाते हैं, दवा इस्तेमाल करो, लेकिन सबसे पहले बॉडी का तनखिया करके बाद में इस्तेमाल कराना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। Any question? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था मैडम, जैसा आपने बोला था अल्कोहल है, बियर है जो मशरूब में है, तो अभी ये इस्लामिक नजरिए से तो समझो लोग इसको ममानियत है ना इस चीज पर, तो लोग कैसे देखेंगे अगर किसी को एडवाइस किया आपने कि बियर लीजिए या अल्कोहल लीजिए तो? ये मैं इक्विवेलेंस यूज करी हूँ, लेकिन जो मेडिसिनली हम लोग नबीज या फुका बना के देते हैं उसके अंदर अल्कोहल शुड नॉट बी मोर देन 8 to 10%, जिससे मरीज को इंटॉक्सिकेशन नहीं होना। ये जो शराब बनने का जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, वो प्रोसेस के बारे में यहाँ पे वो मिसाल है। वो एक्चुअली वाइन और शराब जो दुकानों में मिलती है, लिकर वगैरह, दैट इज नॉट द ट्रीटमेंट पार्ट। इसके अंदर आप मरीज को फुका बना के दें या नबीज बना के दें, जिसके अंदर फर्मेंटेशन से थोड़ा एक 5 to 10% के रेशियो के अंदर जो अल्कोहलिक ऑर्गेनिक, एक्चुअली क्या है वो ऑर्गेनिक एसिड्स एंड एंजाइम्स होते हैं, जो फर्मेंटेशन का लफ्ज आने की वजह से उसको शराब या फुका कबीर का नाम लिया गया है। और बहुत सारे नॉन अल्कोहलिक बियर्स भी मिलते हैं, ये सब मार्केटेड मिलते हैं, लेकिन आप है ना खुद बना के तैयार करके दें तो इससे फायदा होगा। ये इस्लाम में भी शराब का इस्तेमाल टोटली फॉर द पर्पस ऑफ नशा या इंटॉक्सिकेशन प्रोहिबिटेड है। दवाओं के लिए 5 to 10% इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पे जो होम्योपैथी की दवाएं बनते हैं उसके अंदर अल्कोहल ही बेस्ड होता है, जिससे गोलियां तैयार की जाती हैं। उनके टिंचर्स जो बनते हैं वो अल्कोहल से ही बनते हैं। तो बहुत सारे मुसलमान डॉक्टर्स हैं जो होम्योपैथ्स, दे ऑल्सो प्रिपेयर एंड यूज दिस होम्योपैथी की गोलियां। तो इसे दवा इस्तेमाल करने में कोई नुकसान, मैं तरफ से कोई इशू नहीं है। थैंक यू। जी, एनी क्वेश्चंस? एक नेक्स्ट क्वेश्चन था मैडम के जैसा अभी बलगमी मिजाज है या फिर समझो सफरावी मिजाज है, तो उनके हिसाब से इसको डिवाइड किया जाएगा ये मशरूबात को, क्या कैसा लिक्विड डाइट्स को क्या कैसा? सफरावी मिजाज में सफरावी है या फिर कुछ लोग बलगमी है, जैसा उनको कुछ लोगों को दही नहीं चलता है, समझो कर्ड नहीं चलता है, छाछ नहीं चलती है, लींबू नहीं चलता है, समझो इस हिसाब से पूछ रहा हूँ। उस हिसाब से सबसे बेहतर आप है ना जो माउल असल है उसका इस्तेमाल कराओ, या फिर मैं अभी मुझे रिकलेक्ट नहीं हो रहे, बहुत सारे जो हार मिजाज वाले जो जैसे शोरबा है, माउल असल है या माउल लहम है, इनका इस्तेमाल करो। जो बारिद मिजाज के लोग होते हैं उनके अंदर बहुत सूथिंग होता है। मैं क्या बोली, जो माऊ राइब है या कर्ड्स है, ये सब हर मिजाज में और हर मौसम में इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं। अगर सरद मौसम है, बारिद मिजाज लोग हैं, उनके अंदर आप गरम चीजों का इस्तेमाल कराएं। जी मैडम, थैंक यू। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। एक क्वेश्चन ये था कि जो हम लोग, हाँ बताएं। मैम अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम लूज मोशन, कॉलरा, ये सब केसा में सब ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता मैम लोगों को। अब फिजिकल एग्जामिनेशन में देखे तो उनका टोन, स्किन टोन सब बहुत लूज हो जाता। इस टाइम में आपको ग़िज़ा कैसा मैम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं इसमें? सबसे पहली बात, आप इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का वो है ना वो कॉन्सेप्ट अलग छोड़ो। जो मरीजों में जो इसहाल का प्रॉब्लम है, जिनके अंदर ज़ोफ़े अमा है, ऐसे मरीजों के अंदर आप ऐसी चीजों का इस्तेमाल करो जो अमा की ताकत को बढ़ाए, जिनके अंदर काबिजियत है, तो उन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अपने आपको बताया था ना, माल अब्ज़र सिंड्रोम में सिरके का इस्तेमाल, सिरका का या सिकंजबिन का इस्तेमाल, तो ऐसे चीजों से क्या है मरीजों में आंतों के अंदर ताकत आती है, काबिजियत बढ़ती है। मैं थोड़े जो फॉर्मुलेशंस जो आमतौर पे मैं मरीजों में मैं देती हूँ वो सिंगल ड्रग में है जो आसिर इफेक्ट लगते हैं। फॉर एग्जांपल आसिर के सबसे बेहतरीन मिसाल है अनार, पोस्ते अनार। अगर आप
कच्चा पका अनार पूरा बहुत ही राइप तो नहीं रहा, हरी हरी थोड़ा ग्रीनिश कलर का अनार लेके उसको आप है ना क्रश करके छिलके के साथ उसका रस पिलाएं, देखिए कितना बेहतरीन इस हालों के अंदर वो काम करता है। या फिर हमारा जवारिश है बिस्बासा भी नहीं, अगर आपको कुछ ना मिले तो सिर्फ जायफल एंटी डायरियल है, जायफल का आप पाउडर बनाकर शहद के साथ इस्तेमाल कराओ तो वो भी बेहतरीन मैदे के अमराज के अंदर। या फिर मस्तकी भी, जवारिश मस्तकी का इस्तेमाल, जवारिश बिस्बासा है, बहुत सारे दवाएं हैं जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल एक रेमेडी है, आप है ना सौंफ लीजिए, पोस्त से खसखस लीजिए, पाउडर करके थोड़ा सा चाहे तो उसमें थोड़ी बहुत मेथी ऐड करो, पाउडर करो और मरीज को उसको इस्तेमाल करो, उससे भी बेहतरीन पूरा जो अम्मा के डाइजेशन मतलब जो बदहजमी से जो डायरिया हो रहा है उसमें भी बहुत करता है। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मेंटेन करने के लिए बेहतरीन हमारे पास माउल असल है, माउल शहीद है, उसका इस्तेमाल करो आप, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी मैम, थैंक यू मैम। मैम बच्चों में भी दे सकते हैं? जी इस्तेमाल करा सकते हैं, नॉट इन न्यूनेट्स, जो बच्चों को आप ग़िज़ा दे रहे हैं, दूध पीते बच्चों में नहीं, जो बच्चों को 6 महीने के ऊपर के आप जो बच्चों को ग़िज़ा देते हैं वैसे में थोड़ी बहुत क्वांटिटी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैम जी आप बोले अनार दाना प्लस अनपोस्ट अनार दो भी मिला कर, साबुत अनार दाना प्लस पोस्ट सब मिला के आप उसका क्रश करके रस निकाल के डायरिया के अंदर बेहतरीन इफेक्ट है। जी मैम, आपको अनार मिलने में मुश्किल हो रही है तो सिंपल आप है ना जायफल होता है, जायफल पाउडर करो, मेथी का पाउडर बनाओ, उसको आप है ना अगर एल्डरली पीपल में दाना तो आप इसके अंदर माओ राइस बटर मिल्क के साथ में दो, या नहीं तो कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत 1 टीस्पून दही में मिक्स करके इस्तेमाल करो। डोज कितना मैम? 1 स्पून क्या मैम? डोज जी डोज आप 1 स्पून बीड़ी दे सकते हैं क्या? एक चम्मच टीडीएस दे सकते हैं आप डायरिया के अंदर। जी ओके मैम, ओके शुक्रिया मैम, शुक्रिया जी। एनी मोर क्वेश्चंस? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मेलानकोलिया के पेशेंट्स में किस तरह की ग़िज़ा देनी चाहिए? सौदावियत, मेलानकोलिया का मतलब जिसके अंदर सौदावियत का गलबा होता है, तो मैं पहले ही बताई थी, जो सौदावियत ज्यादा होती है वैसे पेशेंट्स के अंदर आप उसके अंदर बुरूदत भी है, खुश्की भी है, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जो उसके जो मिजाज का जो इन्वॉल्व सौदा को आमतौर पर निकालने के लिए बेहतरीन ग़िज़ा मैं अभी बताई आप लोगों को, क्या थी वो? नहीं, माउल असल शहद का पानी, माउल असल खासकर माउल असल जो है शहद का पानी सौदावी अमराज में खासकर मालिकोलिया के केसेस में या जहां भी आप सौदे का गलबा हो वहां पर आप माउल असल का इस्तेमाल कराओ। उसके अंदर चाहे तो मैं बोली ना जो आप जोशांदे वगैरह बना के, जैसे सफरे का सौदा का ज्यादा गलबा है तो बिस्फाइज अफसनदीन बादरंज बोया उस तो खुद से चारों का जोशाना निकाल के उससे माउल असल तैयार करके तो बेहतरीन रहेगा। प्लीज रिपीट कीजिए। बिस्फाइज अफसनदीन बादरंज बोया उस तो खुदूस, ये चारों सौदे को निकालने के लिए बेहतरीन अजाए। आप एक निमोनिक में याद रख लो इसको, बाबू इजीली याद रहेगा। बिस्फाइज अफसनदीन बादरंज बोया उस तो खुदूस, ये चारों का जोशांदा निकाल के आप सौदावी अमराज में माउल असल तैयार करके दें, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू मैम। वेलकम। एक क्वेश्चन था मैडम कि जैसे अभी ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक जो आर्टिफिशियल ये आ रहा है सिरका जो आ रहा है उसमें हम डिफरेंस पहचानेंगे समझो तो कौन सी कंपनी का लेना चाहिए जो ओरिजिनल नेचुरल सिरका मिलेगा? जी आमतौर पे जो सफेद सिरका होता है वो सिंथेटिक है, वो एसिटिक एसिड से तैयार किया हुआ है, लेकिन अगर आपको इस्तेमाल करना है तो जो फ्रूट से बनाए हुए सिरका है उसके अंदर मेडिसिनल वैल्यू ज्यादा होती है, जैसे एप्पल सिडर विनेगर है या फिर जामुन का सिरका मिलता है, गन्ने का सिरका मिलता है ये। लेकिन यहाँ साउथ में बेंगलोर में ये सब मिलना मुश्किल है, लेकिन हम लोग अगर हमारे कुछ सैदला डिपार्टमेंट में कुछ दवाएं तैयार करना है जिसमें हम लोगों को सिरके का जो गन्ने का सिरका है या फिर जामुन का सिरका जरूरत पड़ती है, हम लोग नॉर्थ से ही मंगाते हैं, बच्चे कहीं से कांटेक्ट करके मंगवाते हैं, तो हम लोग वो जो फ्रूट वाला सिरका है उसी को इस्तेमाल करना बेहतर है।
अगर कुछ ना मिला तो लास्ट कोई सब्स्टिट्यूट नहीं रहा तो आप लोग है ना वो वाला यूज कर सकते हैं, जो एसिटिक एसिड से सिंथेटिक जो बनाया हुआ है उसको यूज कर सकते हैं, सफेद विनेगर जो है वो। आमतौर पे एप्पल सीडर विनेगर बहुत कॉमन चल रहा है आजकल, इसी का इस्तेमाल करिए, बेहतरीन है वही। जज़ाकल्लाह। जी अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, अब जी आपका वक्त भी बहुत ले लिया। अब जी थैंक यू। इंशाल्लाह ओके, आपका बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे मौका दिया अपने नहीं नहीं, इंशाल्लाह बार बार जहमत देंगे आपको। और जो भी क्वेश्चन ग्रुप पर आप लोग पूछना चाहें, जैसे डायबिटिक डाइट है और आर्थराइटिस डाइट है, थोड़ा सा इस तरह से एक चार्ट कुछ इस टाइप का बनाकर, डिजीज जिससे कि वाइज। हम लोग अच्छा अच्छा, जी डिजीज जी वाइज आप चाह रहे हैं इंशाल्लाह। लाइफ स्टाइल डिजीज पे जो हम लोगों के लिए क्या बेहतर है, और थोड़ा सा उस पर भी थोड़ा तस्करा ग्रुप पर, थोड़ा सा एक अपनी एक्सरसाइज बीच में थोड़ा सा आप शेयर कर दिया कीजिए। जिसपे तो हेल्थी वे ये पे। जी जी जी, हेल्दी वे। अच्छी बात है, इंशाल्लाह जी भी बहुत मौका बहुत मिला, शुक्रिया। अगर मैं फ्री जी हुई तो मैं थोड़ा बहुत मैं शेयर करती रहूंगी टाइम बाई टाइम। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका कंक्लूड करती हूँ।